Hello guys, good morning. Myself Parikshit Singh and I am the student of Code Virus Security and today's my topic is about AI. And first we start with introduction. Artificial intelligence is the revolution the way we interact with technology. Here यहाँ ये बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्रांतिकारी वे है जिससे कि हम टेक्नोलॉजीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. इट इज़ रैपिडली ग्रोइंग फील्ड दैट अलाउ मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड परफॉर्म टास्क्स. ये एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ फील्ड है और जो कि मशीन्स को अलाउ करता है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड परफॉर्म टास्क परफॉर्म करने के लिए एंड टाइपिकली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंट जिसके लिए आमतौर पर मानव ह्यूमंस की नीड होती है. फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू वर्चुअल असिस्टेंट्स. सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट्स. एआई इज ऑलरेडी चेंजिंग द वर्ल्ड एज वी नो इट एंड एआई इज ऑलरेडी चेंजिंग द वर्ल्ड एज वी नो इट. एआई पहले से ही तैयार है वर्ल्ड को चेंज करने के लिए. एंड देन we study what is AI. AI refers to simulation of human intelligence in machine. And here AI एक example है human intelligence का that are programmed to think and act like a human, जो कि प्रोग्राम्ड किया गया है मशीन के रूप में जो कि एकदम humans की तरह think कर सके और behave like humans, also acts like humans. It involves the development of algorithm that can process and analyze larger amounts of data and make decisions, recognize pattern and learn from experience. इसमें कुछ algorithms यूज किए गए हैं जिससे कि बहुत एक लार्ज अमाउंट में डाटा जो स्कैन हो सके और डिसीजन मेकिंग ऑल्सो रिकोगनाइज द पैटर्न एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस और डेटा को रिकोगनाइज किया जा सके और इसके एक्सपीरियंस से. एंड देन types of AI. There are two types of AI, narrow AI and general AI. Narrow AI is designed to perform a specific task such as a playing chess or analyzing data. Narrow AI इस तरह से डिज़ाइन किया गया है like basic works like chess and हमने खेला है लूडो में गेम्स like computers के against. Then narrow AI is basic. And then we can talk about general AI. On the other hand, can perform any intellectual tasks that a human can do. General AI एक एक तरह से बोल सकते हैं कि humans के हेल्प करने के लिए क्रिएट किया गया है. ओके. देन एप्लीकेशंस ऑफ एआई. AI has a wide range of applications from healthcare to finance to transportation. AI का एक wide range application है जो कि healthcare से लेके transport and finance में भी use होता है. It can be used to analyze medical images, detects fraud in financial transactions. इसको it also used इसका use पहले से ही होता है medical images को analyze करने के लिए, scan करने के लिए, फ्रॉड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए और ड्राइव्स कार्स में भी. AI is also used virtual assistants like Siri and Alexa and Google Assistant. AI वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में भी यूज होता है like Siri, Alexa and Google Assistant. Then challenges of AI. As AI become more advanced, there are concerns about its impacts on society. जैसे जैसे एआई अधिक एडवांस होती जा रही है वैसे ही हमारी सोसाइटी पर इसका प्रभाव भी पड़ना स्टार्ट हो गया है. Some worry that AI could lead to widespread job loss. कुछ लोगों को चिंता है कि एआई से बड़े पैमाने पर नौकरियां छूट सकती हैं. And while others fear that it could be used for malicious purpose. और जबकि अन्य को डर है कि इसका इस्तेमाल कुछ दुर दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है. Additionally, there are concerns about privacy and data security. इसके अतिरिक्त कुछ सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी को लेकर भी कुछ लोग चिंतित हैं. And then conclusion, AI is a powerful technology that has a potential
to transform our world. एआई एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। एंड while there are challenges to be addressed, the benefit of AI are clear. हालांकि कुछ चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना है, बट बट एआई के लाभ स्पष्ट हैं। By embracing AI, we can improve the efficiency, enhance decision making, and create new opportunities for growth and innovations. ओके, एआई को अपनाकर हम अपनी दक्षताओं को सुधार सकते हैं, डिसीजन निर्णय की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, एंड सम पॉइंट्स अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस some points about the artificial intelligence. Then here, machines with artificial general intelligence can perform most tasks like a human. जो artificials की machines हैं वो एकदम humans की तरह ही टास्क को परफॉर्म करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फास्टर एंड स्मार्टर देन ह्यूमंस इन मेनी केसेस। कुछ केसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही फास्ट और स्मार्ट वर्क करती हैं ह्यूमंस के अकॉर्डिंग। AI developed for some destructive purpose can bring major harm to human being. AI डेवलप की जा सकती हैं, AI से डेवलप कर किया जा सकता है कुछ डिस्ट्रक्टिव पर्पस, मीन्स विनाशकारी पर्पस के लिए भी AI का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम ह्यूमंस पर बहुत ही मेजर हार्म होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड द रिजल्ट विद इनक्रेडिबल एक्यूरेसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। मॉडर्न रोबोट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पावर ऑफ एआई। मॉडर्न रोबोट जो है वो बेस्ट एग्जांपल हैं एआई का। एंड एआई हैज टेकन ओवर द मोस्ट ऑफ डिवाइसेस इन प्रेजेंट टाइम। एआई हमारे डिवाइसेस में भी प्रेजेंट हैं, लाइक ऑल्सो पढ़ चुके हैं Google, Siri, Alexa, and others. And some main AI which we use in our daily life. Okay, Google Assistant and Google Maps in our smartphones are example of AI. Google Assistant और Google Maps का एक स्मार्टफोन में एग्जांपल है AI के। Siri in Apple, iPhone and iPads exhibit artificial intelligence. This application helps to performing various tasks without typing. The manufacturing sector has been greatly benefit from AI. It minimizes the workload by doing the work in a fast and efficient manner. Okay, then thanks.